Please start. Let us see the introduction, object, extent, and scope. Now, what is this given? Please read. Generally, laws can be divided into two categories: substantive laws and procedural laws. Substantive laws create, define, and confer substantive legal rights and duties, whereas procedural laws lay down mechanism and manner in which such rights may be enforced and recognized in the courts of law. So, Indian what is substantive law? Substantive law create CDC. अब substantive law है तो क्या याद रखना है आपको? CDC. What is CDC? Create, define, confer. Create, define, confer. What? Legal rights and duties. Legal rights and duties. Now, what is procedural law? DM. DM माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. इधर क्या होगा? डाउन, लेट डाउन mechanism and manner in which such rights may be enforced and recognized in the courts of law. ठीक है. Next, Indian Penal Code. Hello. Indian Penal Code, Indian Contract Act, Transfer of Property Act, etc. are instances of substantive laws, while Code of Civil Procedure, Code of Criminal Procedure, Indian Evidence Act are instances of procedural laws. Next, The efficacy of substantive laws depends on the quality of procedural laws. Unless the procedure for enforcing a right is simple, effective, expeditious, and inexpensive, substantive laws will fail their purpose. will fail their purpose. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया, what are substantive laws? So what will you say? Substantive laws, procedural law का क्या काम है? Fine, confer. Why procedural law? What is the relation between procedural law and substantive law? क्या लिखते हैं आप? Answer. How procedural laws complement the substantive laws? Procedural laws are enforcing rights. Therefore, procedural law should be simple, effective, expeditious, and inexpensive. Then substantive law will be very useful. Unless until the procedural laws are not, unless procedural laws are simple, effective, expeditious, inexpensive, substantive laws का effectiveness इतना ज्यादा नहीं रहता. समझ में आ रहा? तो आपको एक आंसर बना के लिखना है. एग्जाम्पल तो दे लेते आप. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Next, what is the object? What is the object of the code? What is the object of CPC? तो क्या है ऑब्जेक्ट? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? मकसद क्या है सीपीसी का? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज ए कंसोलिडेटेड कोड. व्हाट इज द कंसोलिडेटेड कोड? अगर आप यू हैव योर सीपीसी, Yes, sir. सबसे पहले आप ओपन करिए. An act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature. समझ में आ रहा? तो क्या दिया हुआ है फर्स्ट इसमें? यू हैव योर हाइलाइटर. Exact है सर मेरे पास. जी, I'm having bare act. नहीं, बेरैक में आपको हाइलाइटर है तो आपको बेरैक जब फर्स्ट पेज निकालते आप तो उसमें लिखे हुआ है an act to consolidate and amend the laws. The laws relating to the procedure of the courts of civil judicature. Civil judicature, where it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of courts of civil judicature. It is hereby enacted as follows. तो कहाँ से लिया ऑब्जेक्ट? इधर से लिए. तो क्या है ये? Code of civil procedure is a consolidated code. It lays down all the laws relating to the procedure to be adopted by civil courts. ठीक है.
The preamble of the court states that it is to, now this is known as preamble. पहले जो आप 2 लाइना पढ़े तो मतलब क्या है, preamble. नॉर्मली पहले जो लॉस आते थे पूरे हमेशा स्टार्ट में preamble देता था उन्हें. अब ये preamble थोड़े हटा दिए, अब जो लॉस आ रहे पार्लियामेंट से जो पास हो रहे, तो क्या बता रहा preamble? It is to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature. Now, ये तो आपको कोड में है, लेकिन आपका वजन कब मिलता है आपके आंसर में? When you write the case law or the what you can say, whenever you give the what the Supreme Court, the highest court of the land has said. So what has the Supreme Court said and which case? Please read. Hello. Yes, sir. सुप्रीम कोर्ट कौन से केस में, देखिए अगर आप पढ़े, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉस? मतलब वी डिड नॉट गेट एनी क्लैरिटी. तो क्लैरिटी कब आती है आपको? जब सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस पढ़ते हैं आप. Yes. So what in which case Supreme Court said about this object? Please read. Salim Advocate Bar Association 2 versus Union of Salem Advocate Bar Association, not Salim. तमिलनाडु में सालेम बोल के जगह है, not Salim. Salem Advocate Bar Association 2 versus Union of India, 2005 का केस है. What does the Supreme Court observe? Observe that procedure is designed to facilitate justice and it is not a penal enactment for punishment and penalties. The laws of procedure should be so construed as to render justice wherever reasonably possible. So what does the Supreme Court said? Supreme Court observed that the procedure is designed to facilitate justice and is not a penal enactment. Penal के लिए अलग है, ठीक है. मेजर क्या है इसका एम? टू फैसिलिटेट जस्टिस एंड नॉट ए penal enactment for punishment and penalty. समझ आ रहा? Yes, sir. The laws of procedure should be construed so as to render justice wherever reasonably possible. Clear a point? Yes. तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका सीपीसी का? फैसिलिटेट करना है या penal प्रोविजन है? Facilitate justice. So it is the object is to facilitate the justice. Now what is the next? देखिए, it's not necessary you should be remembering each and every case law, लेकिन आपको जरा याद है, you will get more points with your against your competitor. ठीक है. Next, the code also deals with the substantive rights. अब देखिए, for example, in the very beginning I asked you, क्या सीपीसी खाली प्रोसीजरल लॉ अप्लाई होता या सब्सटेंटिव भी है? तब क्या बोले? प्रोसीजरल. अगर आपको आप ब्लैंकेट बोल दिए कि भाई सीपीसी से प्रोसीजरल है, इधर स्टेटमेंट है राइट एंड रॉन्ग. माने थोड़े प्रोविजंस ऐसे हैं जो सब्सटेंटिव राइट्स के बारे में बात करते, ठीक है. द कोड आल्सो डील्स विद द certain substantive rights, but the essential object is to consolidate the law relating to civil procedure. In Premlal Nahata, Chandni Prakash Sikaria 2007 में क्या बताए? Supreme Court said that no doubt the court also deals with the substantive rights, but it is essential object is to consolidate law relating to civil procedure. ठीक है. एक और एक केस में क्या है? सैयद मोहम्मद बकर वर्सेस अब्दुल हबीब हसन 1998 का केस है. held that a procedural law is always in aid of justice, माने help of justice, not in contradiction or to defeat the object is sought to be achieved. So it is always subservient to substantive law. So what do you mean by this? अगर आपको पूछे कि प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ में क्या डिफरेंस है, क्या कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या बोलते हैं आप? Procedural law. In the case of Sayyid Muhammad Bakar versus Abdul Habib Hassan, Supreme Court said that
A procedural law is always subservient to substantive law. ठीक है, थोड़े से खाली substantive rights रहने के just if some substantive rights are there, it doesn't mean that it can become superior to substantive law. So हमेशा कह रहा था procedural, it facilitates the substantive law. ठीक है, तो एक तो पॉइंट अगर आया आपको तो क्या बोलते हैं, वेदर अगर आपको पूछे राइट डाउन इज सिविल प्रोसीजर कोड इज प्यूरली प्रोसीजरल लॉ, एक्सप्लेन, इफ नॉट एक्सप्लेन, तो क्या लिखते हैं आंसर? The code also deals with certain substantive rights, but the essential object is to consolidate the law. Okay, and it is to facilitate the substantive law. ठीक है, जस्टिस. ठीक है, नेक्स्ट. और ये केसेस लॉ आप अपने नोट्स बना रहे? Yes, sir. मेकिंग योर नोट्स. आप ठीक, हर चीज याद नहीं रहती, बट ट्राई टू जस्ट एक बार लिखे 3 बार रिवीजन. 1:3 माई फॉर्मूला इज 1:3. एक बार लिखना, 3 बार उसको रिवाइज करना. ठीक है, Yes. अगर एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करे तो तीसरी बार जो पढ़े वो याद रहता. पहली बार भूल जाते, दूसरी बार 50%, तीसरी बार 60% तक याद रहता. एग्जाम में कहता 40% याद रहता. जस्ट 1:3 फॉर्मूला एक बार लिखना, 3 बार रिवाइज करना उसको. ठीक है, नेक्स्ट. अब देखिए कोर्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ कोर्ट. एनी कोर्ट का रोल क्या है? द रोल ऑफ कोर्ट इज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. ठीक है, अगर आप कोर्ट को पूछे तो आप सीपीसी कैसा इंटरप्रेट करते, तो सुप्रीम कोर्ट इन संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल 1955 का केस है. द कोर्ट हेल्ड दैट कोड इज डिजाइन टू फैसिलिटेट जस्टिस and hence two technical construction of provision should not be made. Normally क्या है, अगर आप pleadings पढ़े, what are pleadings? Pleadings क्या क्या है? Pleadings, plaint and written statement. Plaint and written statement. और उसमें इतने टेक्निकलिटीज है, पैराग्राफ बनाना, उसमें क्या बोलते हैं, नंबर आम देना, ये देना, वो देना. आप हाई कोर्ट में प्लीड करें कभी? No, You sir. said you will be practice करें आप 3 साल या Yes. एटलीस्ट 2 साल. आप कौन से कोर्ट में करें? Karimnagar District Court. करीमनगर Section. में. प्लीडिंग्स बनाए? No, sir. ड्राफ्ट करे प्लीडिंग? नहीं. एक बार भी ड्राफ्ट नहीं करे? No. अच्छा, कोर्ट को जाके क्या करते थे? खाली डेट लेके आते थे? Explain नहीं करते थे सर. नहीं, कोर्ट को गया बोल के ऐसा बोलते थे. आप खाली डेट ही ली अभी तक, एक बार भी आर्ग्यूमेंट नहीं करे? नहीं. या ड्राफ्टिंग भी नहीं करे? नहीं सर. तो उसमें क्या टेक्निकलिटी ज्यादा रहते. आई एम नॉट मच इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड, लेकिन आई एम इन द ड्राफ्टिंग बिकॉज जहां मैं काम करता था, he used to the advocate used to call me only for drafting, senior advocate. तो ड्राफ्टिंग के लिए बुलाते थे मेरे को, आओ ड्राफ्ट करो चले जाओ. I never went to for take any dates, कभी नहीं गया. ठीक है, तो क्या है, इसको क्या है, फैसिलिटेट जस्टिस को फैसिलिटेट करना है. क्या है, टू टेक्निकल नहीं बनाना है. समझ? द कोड इज डिजाइन टू फैसिलिटेट जस्टिस and hence two technical construction of provision should not be made. ये कब बोले थे? 1955 में बताए थे. हमेशा क्या है, याद दिलाना पड़ता रहता. then the provision should be construed liberally and technical objection should not be taken up. Clear है point ये? Yes sir. Next, in Jai Jai Ram Manohar Lal versus National Building Material Supply 1969, कोर्ट फिर से याद दिलाना पड़ा कि rules of procedure should be liberally construed so as to render the enforcement of substantive rights effectively. अगर इसको आप टू टेक्निकल बना दिए, सब्सटेंटिव राइट्स फिर कब इफेक्ट होते, we do not know. A hyper technical view should not be adopted while interpreting the code. Now tomorrow you will become a judge, you will become a magistrate.
नाउ व्हाट विल बी योर व्यू? आपका क्या व्यू है? वेदर यू विल बी टू टेक्निकल और लिबरल विद टेक्निकलिटीज? अगर कुछ टेक्निकली सही नहीं है समझो, विल यू ठीक। वापस कर देते आप, या यू विल एक्सेप्ट इट? नो, रिटर्न कर देते। रिटर्न कर देते कहीं वो? अब तो क्या है सीपीसी का प्रोसीजर, क्या है, लिबरली व्हाट इज द एम? इट शुड फैसिलिटेट करने के लिए है। फैसिलिटेट। तो आप वापस कर देते तो फिर डेट कब मिलती, फिर डेट कब देते आप? इट शुड बी लिबरल, इट शुड बी लिबरली कंस्ट्रूड सो एज टू रेंडर enforcement of substantive rights. Now, the अशोक कुमार कलरा वर्सेस सुधीर अग्निहोत्री फिर 2020 का केस है. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट procedural laws should not be interpreted to defeat justice. अगर आप देखो, there is a saying, justice delayed is justice denied. अगर आप टेक्निकलिटी के बेस पे अगर रिजेक्ट कर दिए तो जस्टिस डिनाई हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो आर यू, when you become, just assume that you have become a judge, that you have become a magistrate, or you have become a judge. Now if you reject based on technicality, whether the justice delayed and it will become justice डिनाई। denied. तो इसका पढ़ के फायदा क्या होगा फिर? When the court set out to do justice, they should not lose sight of the end goal and amid technicalities. ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना, हमारे को प्रॉब्लम होती है एडवोकेट से. शुड नॉट लूज साइट ऑफ द एंड गोल. समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? Okay. What is the next thing? Extent, applicability and commencement. अब देखिए, the code extends to whole of India except the state of Nagaland and tribal area. ठीक है, ये आपको पूरा कंप्लीट नहीं है. नागालैंड एरिया में और ट्राइबल एरियाज में क्या है? अगर बेर एक्ट है आपका, यू हैव यस योर सर। बेर एक्ट, ओपन योर बेर एक्ट, रीड द एक्सप्लेनेशन पार्ट. प्रिलिमिनरी है, उसके बाद में प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न में by notification whole or part of state of Nagaland such a tribal area. The tribal areas means territories which are immediately before the 21st day of January 1972 were excluded in the tribal areas of Assam, paragraph 20 of the 6th schedule of the constitution. ठीक है, तो एक बार वो पढ़िए कौन से उसमें आप एक्सक्लूडेड है सीपीसी. और पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई नहीं होता था, बट एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 it is applicable to Jammu and Kashmir also. ठीक है. यस सर। The central government by gazette notification appointed 31st October 2019 as the date on which this act came into force in J&K. The act bifurcated the J&K. Section 95 1 of the act provided all central laws, table 1 of the 5th schedule. तो पूछे तो पूछ ले सकता, because it is sub judice. यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन 5th शेड्यूल में है, ये आप लोग ये पढ़ लीजिए. ठीक है. देन अब सुप्रीम कोर्ट एक और केस है, वेस्टर्ली धकार वर्सेस सहकाया लिंगदो 2015 का केस है. held that the areas to which the code does not extend, the courts in such areas shall be guided by spirit of code. मतलब there is, मतलब क्या है इसका? कोड एक्सटेंड तो नहीं हाँ होता, हाँ। लेकिन उसकी जो स्पिरिट है, स्पिरिट क्या है सुबह सीपीसी की? अगर पूछे व्हाट इज स्पिरिट ऑफ सीपीसी, मतलब क्या लिखते हैं आंसर? इज टू फैसिलिटेट द जस्टिस, यस सर। इज टू फैसिलिटेट द जस्टिस. अब डायरेक्टली ये बता रहे कि भाई अगर, अब नॉर्मली क्या बोलते हैं, वन इंडिया वन लॉ बोलते हैं, लेकिन अब नागालैंड में अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो टाइम पे क्या है, घुमा फिरा के पूछ सकता हूँ, तो क्या लिखना? सुप्रीम कोर्ट सेड. अब नाम भी याद नहीं रहे तो क्या है, इट इज हेल्ड दैट
wherever the code does not extend, it shall be guided by the spirit of the code. It applies to proceedings in the civil courts in India, except the specific provisions in special or local laws, which has been saved under section 4 and 5 of the code. So ये कब apply हुआ था? When was it enacted? As कब मिला CPC को? 1908. 21st March 1908, and when it came into existence or effect? January 1909. 1st January 1909. और ये क्या है, एक अमेंडमेंट कब हुआ इसके बाद? 1976 में अमेंडमेंट हुआ था. तो वो अमेंडमेंट कब आया? 1 फरवरी 1977 में. और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और एक बार अमेंड हुआ 1999 में. फिर लेकिन जो 1999 में अमेंड हुआ तो कितने साल लगे इफेक्ट में आने के वास्ते? 3 साल लगे ऑलमोस्ट, 2002 में. ठीक है, इसको ये पहला 1 साल, फर्स्ट 2 अमेंडमेंट्स क्विकली आ गए, थर्ड अमेंडमेंट इफेक्ट में आने टाइम लग गए. नाउ व्हाट इज द स्कोप? स्कोप मतलब दायरा, व्हाट इज सर्कल. Code is exhaustive on a matter specifically dealt in it. The legislature is incapable of contemplating all possible circumstances that may arise in civil litigation. So with the regard to those circumstances, the court has inherent powers to act according to the principle of justice, equity, and good conscience. Such inherent powers of the court are saved under section 151 of the CPC. Most important concept, आपको ये क्वेश्चन आता ही आता. तो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट कहाँ है, कौन से सेक्शन में है? 151 ऑफ द कोड. कौन से केस में है ये? मनोहर लाल स्टेट हीरालाल, 1962 का केस. ठीक है. देन व्हाट इज स्कीम ऑफ द कोड? ये तो आप मालूम ही है आपको. इसके क्या है, 2 पार्ट्स है. एक पार्ट को बॉडी ऑफ द कोड बोलते हैं, दूसरा रूल्स है. लेकिन इसको कौन अमेंड कर सकते हैं ये डिफरेंट है. और कितने सेक्शन है पूरे? देयर आर 158 सेक्शन. इट कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ सब्सटेंटिव नेचर. रूल्स कंटेन 51 orders, 1 schedule, and it is procedural in nature, which indicate the mode which substantive provisions are to be applied. So by this we complete our first chapter. What is the first chapter? Introduction, object, extent, and scope. Okay. Now tomorrow we'll see the second chapter. अगर आपको क्वेश्चन आया तो एक आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप? Yes, sir. Are you doing answer writing? Yes. How CPC is a procedural law. How CPC is a procedural law in relation with substantive law. और ऐसा लिखो, is CPC purely a procedural law? Question mark. And CPC in relation with the other substantive laws. इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखिए. ठीक है. आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. once you do not do the answer writing, it becomes effective error. Clear है point? Okay, sir. तो क्या है क्वेश्चन? Is CPC a procedural law in Is relation? CPC a purely a procedural law? अगर खाली CPC purely procedural law बोले तो yes बोल के बोल देते आप जनरल में. बट स्पेसिफिक सेंस में क्या CPC प्योरली प्रोसीजरल लॉ है? It is 100% 100% प्रोसीजरल नहीं है. नहीं है. थोड़े से कॉन्सेप्ट क्या है, सब्सटेंटिव प्रोविजंस को भी रिलेट करते हैं उसको. ठीक है. तो ये क्वेश्चन एक आंसर लिखिए आप, एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है. Okay. Thank you.